yesterday. Actually, I was stuck in one of the production issue, so the call get postponed and I was not able to join here. So it happened means in noon, once in a noon, and that was yesterday's bad day, so the production issue happened. Okay, not an issue. We'll start with our third session. Like before this session, we learn about the what is Playwright. So we all know Playwright is open source and is developed by Microsoft. Apart from that, we gone through the features of Playwright, how Playwright provides advanced features that other tools have not provided. So whatever the open source tools are available in market, those tools are not provided all these features. It's all available into the Playwright only. That's why we choose the Playwright to learn. Sorry. Apart from that, we have seen like why we choose the TypeScript for Playwright. Like Playwright has provided, Playwright has multi-language, cross-language apply tool, but we choose the TypeScript only because it's the official support first of all. Then it's a type safety, also smart code suggestion. All these things we have seen into our previous session. Apart from that, we have gone through with the what is TypeScript. So first we see the what is Playwright feature and why we choose the TypeScript. Then we started with the TypeScript language. Like to learn any automation tool, we need any programming language. We need to learn any programming language. So we choose TypeScript and started the learning about the TypeScript. The TypeScript क्या होता है? TypeScript is also open source and it's also developed by Microsoft. That's why we choose कि हम प्ले राइट विथ टाइपस्क्रिप्ट ही जाएंगे क्योंकि मार्केट में इसका ही डिमांड है एंड वी गो थ्रू प्ले राइट टाइपस्क्रिप्ट डेफिनेशन एंड देयर फीचर्स की how it's easy to learn and what TypeScript has provided to new features over the JavaScript. Like TypeScript is same as JavaScript. All the features are available into the JavaScript are also available in the TypeScript, but some advanced features are added. So we can say it's a superset of JavaScript. Then we started with our installation part. What are requirements are required for the Playwright and TypeScript? That all things we have installed. Sorry. So started we done the Visual Studio installation. Then we installed the Node.js part. Node.js is a open source library for the, it's we can say it's a JavaScript runtime environment, same as the Java JRE. So whatever the code we have written with the TypeScript and JavaScript, which is run into the Node.js environment. Okay. Apart from that, we install the TypeScript compiler and executor. So compile is used for the compile our TypeScript program into the JavaScript, and then we can run it on the Node.js environment. Apart from that, we install the executor. So if you want to directly run the program without the compile, then we use the executor. So all these command we have provided into the here. Then we gone through with our first program. Like in the last session, we did some console.log. Like in Java, we use the println statement. Same in JavaScript or TypeScript, we use the console log. So हमने प्रिंट करके देखा कि कैसे होता है नॉर्मल स्टेटमेंट और हाउ वी कैन इजी देन टाइपस्क्रिप्ट में जस्ट इफ वी राइट समथिंग देन हाउ इट प्रोवाइड द ऑटो सजेशंस. तो ये भी देखा था हमने. So whatever the features are provided the TypeScript and Visual Studio, that all we have seen into our last sessions. Okay. Yeah. So now today we'll start with the variables. So this is the first part of sorry. So this is the first part of any programming language. जब भी आप कोई भी programming language start करते हो सीखने के लिए, then you should start with the variables. We need to start from the variable कि इसका जानना बहुत जरूरी होता है कि क्योंकि आपको कुछ भी करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यू नीड वेरिएबल. जैसे अब हम कुछ भी करते तो किसी चीज का नाम होना जरूरी होता है अपने लिए कि हम काम पे जाते हो, कंपनी का नाम जरूरी है, खुद का नाम जरूरी है, स्कूल का नाम जरूरी है. सेम थिंग वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड और स्टोर सम डेटा. इसके अंदर एक नाम मतलब ये वैल्यू स्टोर करता है. वेरिएबल इज अ नेम समथिंग एंड इसके अंदर वैल्यू स्टोर होता है. ओके, वी कैन से इट्स
always represent the purpose. Like we last time we gone through the slides, and that time we seen the some example like variable age equal to 30, where age equal to 30. तो इट्स पर्पज है इसका ए नेम के पीछे. इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द पर्पज. एज मतलब क्या, किसी यूजर का एज है, किसी यूजर का नेम. अगर हम यहाँ पे वेरिएबल नेम देते हैं वेर नेम, तो इट्स रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द पर्टिकुलर यूजर. सो हमेशा याद रखना, नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल शुड बी ऑलवेज गुड. इससे आपका एक्सपीरियंस पता चलता है, आप कितने प्रो हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ये सब चीजें पता चलती है अकॉर्डिंग टू हाउ यू गिवन द वेरिएबल नेम. कुछ किसी भी चीज का आपको बताया ना कि क्या करने वाले हो आप. अभी नेम दिया, अगर आपको कंपनी नेम डालना है तो सिंपली यू कैन से द वेयर कंपनी नेम. तो ऑलवेज मीनिंगफुल नेम शुड बी रिटन इनटू द प्रोग्रामिंग. करेक्ट. ओके. One more thing, you should always remember that variable name should be start with the small letter only. Okay. एंड जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो फाइल का नेम शुड बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. ये दो थिंग्स ऑलवेज रिमेंबर रखना इन योर माइंड कि कोई भी फाइल जनरेट क्रिएट करते हो, इट्स नेम शुड बी विद द कैपिटल लेटर. अगर वेरिएबल जनरेट लिख रहे हो तो वेरिएबल का नेम शुड बी स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर. ओके. Then there are three types of different keywords available into the TypeScript variable. First one is a where, second let, and const. In next slide, we will see like what is the difference between where, let, const, and when we should use that variables. कि where कब use करना है, let कब use करना है, const use कब use करना है. That things we'll see into the next slide. But remember that there are three types of different keywords available into the TypeScript. ये इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि वेरिएबल्स के कीवर्ड्स कितने टाइप के, कौन से, एंड when we should use the where, when we use let, when we use const. These things should be asked can be asked into the interviews. Okay. Apart from that, like we can see how we can write the variable into the TypeScript. So there is some syntax, like I can showcase you how we can write. So TypeScript syntax first showcase you. TypeScript is a सब superset of JavaScript. तो JavaScript में जैसे लिखते हैं ना, वैसे हम TypeScript में भी लिख सकते हैं. जैसे कि normally where name equal to स्वप्निल. ये format use into the both languages, JavaScript as well as TypeScript, JS and TS. बट स्पेसिफिक आप टाइपस्क्रिप्ट में मत, अगर ये टाइपस्क्रिप्ट में प्रोग्राम में लिख देंगे ना तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन राइट विद द दिस फॉर्मेट एज वेल. बट देयर इज सम न्यू फीचर इन टाइपस्क्रिप्ट, लाइक इज टाइप स्पेसिफिक टाइप स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट. सो वी कैन यूज लाइक एज अ वेयर नेम स्ट्रिंग. ये कौन सा फॉर्मेट है? स्ट्रिंग का फॉर्मेट है. नेम में क्या स्टोर करने वाले हैं हम? स्ट्रिंग. सो इन दिस फॉर्मेट वी कैन राइट. ओके. ये स्पेसिफिक टीएस फॉर्मेट, टाइपस्क्रिप्ट फॉर्मेट. ओके. तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको. सपोज अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा, why TypeScript is come to the picture. पहले क्या होता था? पहले सिर्फ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थी. एंड व्हाट प्रॉब्लम हैपन विद देयर इन द टाइप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज कि सपोज वेयर का मैंने इस वेयर में एक एज वेरिएबल लिखा, वेयर एज इक्वल टू 30. ओके. एंड देन समवन फ्रॉम द माय टीम, एंड अगेन आई फॉरगॉट. जो कि जब आप रियल लाइफ में काम करते हो, रियल वर्ल्ड में काम करते हो, में देयर आर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड. तो वहां पे पता नहीं चलता जल्दी कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे यूज किया है, ऑलरेडी वी हैव यूज और नॉट. सो पहले मैंने एज यूजर का एज 30 कर दिया था. अगेन इन आफ्टर फ्यू लाइंस आई राइट द सेम वेरिएबल वेयर एज इक्वल टू, इसमें मैं गलती से मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया THIRTY. सो अभी क्या हुआ, इसका वैल्यू हुआ ये, क्या इसका टाइप क्या हुआ? स्ट्रिंग. और इसका टाइप क्या हुआ? नंबर. सो इट मेक्स अ कंफ्यूजन कि कई जगह पे इसका वैल्यू आएगा 30 एज अ नंबर, कई जगह पे आएगा 30 एज अ स्ट्रिंग. सो आगे जाके अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो इस वैल्यू के साथ आई कैन डू कैलकुलेशन ना. आई नीड a number value only. So that time makes some mistakes into our coding. So that's why TypeScript comes into the picture, and they make it as a specific
टाइप स्टैटिक्स टेस्टिंग, तो इसमें टाइप दे सकते हैं, वी कैन डू एज, अगर आपको स्पेसिफिक टाइप का देना है वेरिएबल देन वी कैन डू, सो दैट टाइम वी कैन यूज एज अ टाइप इन अवर प्रोग्राम एज वेल, इन अवर फाइल एज वेल, लाइक वेरिएबल वेयर एज, इसका टाइप दिया मैंने एज अ नंबर इक्वल टू 30. So when I use as a when I provide as a number as a data type for that particular variable, then in next line I can't give it as a age equal to 30. अगर मैं ऐसा यूज करता हूँ तो it will give an error. Just let me showcase you कि कैसा error आएगा. Suppose like already we have declared is a where age number equal to 35. Now if I give as a age equal to string दे दिया मैंने, suppose 35, then you can see here it showcases as a error in red marks, correct? So this is one of the feature of TypeScript language ki we can give as a data type with the variable name. Another feature is like it gives the compile time error. अगर ये JavaScript का प्रोग्राम होता तो यहाँ पे compile time error आता ही नहीं. JavaScript only gives the runtime error, not gives the compile time error. So this is one of the feature as well. So keep it in mind. There are two feature new, like we have just seen two features. One is we can provide the data type with the variable. Another feature is like it provide the compile time error so that we can't make a mistake कि पहले हमें पता चल जाता है कि it can give the error, so we can resolve it and it stop us to doing the mistakes. Okay. So next we see the difference between where, late, and const. So now we'll see where to use where to use late, where to use const. Like there are three types of variable. तो हमें पता होना चाहिए ना कि हर एक का स्पेसिफिक स्कोप होगा कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे यूज करना है, कौन सा टाइप कहाँ पे यूज करना है. वी शुड नो अबाउट इट, करेक्ट? So that's why I have created this table. We'll go with the one by one with examples, so you may get a better idea about it and how to use it. But as per the TypeScript documentation, they have provided as a we do not use the where keyword है, we do not use the modern JavaScript or TypeScript. Avoid where because it has a function scope. मतलब अभी TypeScript ने recommended किया है कि जितना हो सके उतना where use करना बंद कीजिए. We should not use it as a where keyword. We should only use two keywords, late and const. But अभी भी we can use it. But उन्होंने recommend किया है कि we should not use it. अगर जरूरत है तो वी कैन यूज इट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी इसका स्कोप क्या होता है, कौन से स्कोप के टाइम पे कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए. वी शुड नाउ विल सी फॉर द स्कोप. Okay, so what is the meaning of this double quote? Any idea? Comment. Yeah, Comment. correct. Yeah, correct. Like So comment, yes. yeah, so if you want to add some specific notes about the program, we can give as a double slash for the single line comment, and if you want to give as a multiple line comment, then we can use as a slash star, and जहाँ पे खत्म हो रहा है अपना फिर से वहाँ पे स्टार स्लैश. ओके, सो इट कमेंट द मल्टीपल लाइंस, एंड अगर आपको सिंगल लाइन करना है देन वी कैन यूज ए डबल स्लैश ओनली. So here we see the scope of where keyword. So scope of where keyword is always as a function. It's देखो अभी automatically उसने auto suggestion दे दिया. Scope क्या होता है where का? Scope where होता है functional scope. जो भी ये लिखा है हमने, it's a function. It's one of the method. It's one of the function. तो इस where keyword का जो where keyword होता है, where keyword का scope होता है function तक. So suppose if I return anything like some. तो मैंने डायरेक्टली कंडीशन दिया इफ ट्रू वेयर ए, और यहाँ पे कंसोल मैंने
तो इसका मीनिंग क्या हो कि अगर सपोज मैंने ये फंक्शन वेयर का स्कोप कहा था कि पूरे फंक्शन में, मैं पूरे फंक्शन में कहीं पे भी वैल्यू डिक्लेयर किया, अभी मैंने ये ब्लॉक के अंदर यूज किया है, इफ इज अ वन ऑफ द ब्लॉक, ये डबल कोट होता है, ये वन ऑफ द ब्लॉक होता है। डबल कोट के अंदर आया मतलब ए ब्लॉक, ए एक ब्लॉक हुआ, ये पूरा एक ब्लॉक हुआ, बट ये पूरा एक फंक्शन हुआ, करेक्ट। तो ये वेयर का स्कोप कहा था, पता है, ये पूरे फंक्शन के अंदर होता है, मैंने कहीं पे भी डिक्लेयर किया, इसके अंदर भी डिक्लेयर किया है, फिर भी मैं बाहर ब्लॉक के बाहर भी यूज कर पा रहा हूँ। अगर इफ वी सी द एग्जांपल, अपना कमांड npx dx tcx मीन्स टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर डेट टू अवर फोल्डर एंड फर्स्ट प्रोग्राम की फाइल के अंदर ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो जस्ट आई हैव री एंटर, यू कैन सी हियर 30 वैल्यू कम्स। नाउ सेम थिंग, अगर वेयर का स्कोप हुआ फंक्शनल स्कोप, लेट का क्या होता है, ब्लॉक स्कोप। लेट एंड कॉन्स्ट का दोनों का स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप। सो दिस इज वन ऑफ द ब्लॉक। अगर मैं इसको लेट कंसीडर करता हूँ, लेट लेता हूँ, देन इट गिव्स द एरर। ठीक, यहाँ पे एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड नेम एज, क्योंकि एज इसके अंदर है, ये ब्लॉक के अंदर है, ये ब्लॉक के बाहर में यूज ही नहीं कर पाऊंगा इसका, ये अपना करली ब्रेसेस के बाहर में उसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा। सो इसका स्कोप क्या हुआ लेट का, ओनली बिटवीन इनटू द ब्लॉक। वेयर का स्कोप क्या था, विद इन द होल फंक्शन। सेम थिंग फॉर द कॉन्स्ट एज वेल, यू कैन सी सेम फॉर द कॉन्स्ट एज वेल, कॉन्स्ट के भी लिए भी उसका भी स्कोप सिर्फ ये। सो इफ यू वांट टू यूज एनी वेरिएबल विद इन द होल फंक्शन, कि मैंने कहीं पे भी उसका डिक्लेयर किया और मुझे पूरे फंक्शन में यूज करना है, ओनली दैट टाइम गो विद द वेयर कीवर्ड, अदरवाइज यूज द लेट और कॉन्स्ट। कि आपको सिर्फ ब्लॉक में यूज करना है, ये करना है, देन गो विद द कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड। ओके, देन विल सी द नेक्स्ट डिफरेंस है द डिक्लेरेशन और वैल्यू असाइनमेंट। ओके, सो डिक्लेरेशन क्या होता है, okay, now we'll see the another example for the declaration. So when you declare any variable, डिक्लेयर मतलब सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर ए, सो ये डिक्लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे, करेक्ट। इसका वैल्यू असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है। अगर मैं अभी ये टाइप कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, फिर भी ये उसका प्रोग्राम रन हो जाएगा और ये दे देगा वैल्यू एज अनडिपेंड, की अनडिपेंड वैल्यू दे सी, कि इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है। ओके, बट अगर सपोज मैं इसको लेट कंसीडर करता हूँ एज अ कीवर्ड, तो देखो, वेयर का था कैन बी डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन, मैंने कुछ वैल्यू दिया नहीं, उसको इनिशियलाइज ही नहीं किया, जस्ट वैल्यू दे दिया, फिर भी आई कैन यूज। देन लेट का क्या है, लेट का भी सेम, कैन बी डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन, सो लेट का भी इट्स नॉट गिवन एनी एरर। बट कॉन्स्ट का क्या होता है, मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कॉन्स्ट मतलब जब मैंने डिक्लेयर किया उसी टाइम में उसको वैल्यू असाइन होना जरूरी होता, करेक्ट। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया तो इट्स गिव्स एन एरर की कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज। सो ये डिफरेंस हुआ कि वेयर और लेट जब होता है तो उसका वैल्यू डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्ट यूज करते हो तब उसका सॉरी, वेयर और लेट जब यूज करते हो तो उसका वैल्यू इनिशियलाइज करना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन इनिशियलाइज इट लेटर एज वेल। बट कॉन्स्ट का वैल्यू होता है, कॉन्स्ट का कीवर्ड जब यूज होता है तब यू नीड टू असाइन एनी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर लेता हूँ तो एरर चला जाएगा। So this is the second difference. Third difference is the redeclaration. So सपोज अभी मैंने वेर यूज किया है, रीडिक्लेरेशन क्या होता है, वेर ए इक्वल टू एज इक्वल टू 10। ओके, वेर एज इक्वल टू 10 एंड अगेन मुझे रीडिक्लेयर करना है, एज का वैल्यू नहीं, मुझे लगता है कि 40 होना चाहिए। यस, वी कैन यूज इट, बट फॉर अगर मैंने लेट यूज किया है, एक मिनट, रीडिक्लेरेशन इट्स नॉट फॉर यस सॉरी, यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ, इट शुड बी डिक्लेरेशन।
रीडिक्लेरेशन शुड बी अलाउ कि यहाँ पे भी मेरा वैल्यू कर सकता हूँ, बट इफ आई यूज एज अ कांस्टेंट तो कांस्टेंट में यहाँ पे एरर आ जाएगा, कैन नॉट असाइन एज बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, इट्स कांस्टेंट वैल्यू, एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया हो गया, उसके बाद आई कांट एबल टू चेंज इट अगेन, करेक्ट. So that's why we can say redeclaration is allow for the where keyword, it's allow for the late keyword but not allow for the constant keyword. Okay. Apart from that, suppose if I use as a where keyword name equal to yes, then again I can redeclare that variable when name equal to ss. It's allowing redeclaration as well. Then अगर मैं लेट यूज करता हूँ, लेट नेम, ठीक, इट्स नॉट, इट्स गिवन एन एरर कि हमें वो डिक्लेयर नहीं कर दे रहा है 2 टाइम. सेम फॉर कॉन्स्ट एज वेल. तो वो जो बैर में आप डिक्लेयर कर रहे हो तो ओवरराइड हो जाएगा या फिर दोनों पे? यस, ये ओवरराइड होगा. सपोज अभी मैंने वेर किया, ओके, वेर यस यस, सो अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो लेटेस्ट वैल्यू, ये सपोज पहला वैल्यू यस था, दूसरा वैल्यू था स्वप्निल, तो सेकेंड वैल्यू इट विल बी प्रिंट. यू कैन सी हियर सेकेंड वैल्यू इट्स ओवरराइट हो गया, जो लेटेस्ट वैल्यू है इट विल बी प्रिंट. ओके, ये आपको कंसोल क्लियर दिख रहा है ना इसमें? यस यस दिख रहा है. ओके, थैंक यू. नाउ विल गो विद द होस्टिंग. तो होस्टिंग क्या होता है? ओके, होस्टिंग मीन्स without declare, without initialization, can we use any value? So yes, for the variable keyword we can use the without initialization or without hosting, उसका वैल्यू आता है अनडिफाइंड. सपोज अभी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया कुछ, और अगर मैंने प्रिंट कर दिया फिर भी, तो सॉरी सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे मिस्टेक वेयर ए करके यहाँ पे कर दिया, then still you can see it gives the undefined value without declaration, without initialization, it can be done. But the same thing, it's not allowed into the late and const keyword. Okay, so what is the best use? The best, अगर आपको best use करना है तो avoid to use a where. अगर आपके वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, रन टाइम कुछ आपको कैलकुलेशंस करना है, देन गोज विद द लेट कीवर्ड. एंड अगर आपका इट्स कांस्टेंट वैल्यू कि एक बार ऐड कर दिया मैंने, वो आपका कभी चेंज नहीं होगा. जैसे आपको इन फ्यूचर आपको प्लेराइट में यूज करना है कि एक वेट टाइम देना है कि हमेशा 5 मिनट वेट करना चाहिए पर्टिकुलर स्क्रीन पे, तो आप एक यहाँ पे एक स्मॉल वेट करके या मिनिमम वेट करके कीवर्ड बना दिया आपने, कांस्टेंट कीवर्ड, एंड डिक्लेयर्ड एज 5 मिनट. सो आपके पूरे प्रोजेक्ट में वो यूज होने वाला है एज अ कांस्टेंट, वो नेवर चेंजिंग वाला वैल्यू. सो दैट टाइम यू कैन यूज एज अ कांस्टेंट. और लेट कब यूज होने वाला है कि आप कोई कैलकुलेशंस कर रहे हो रन टाइम पे, कि आपने बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, सपोज यू हैव बैंकिंग प्रोजेक्ट एंड यू नीड टू डू कैलकुलेशन की फर्स्ट स्क्रीन पे आपने टोटल अमाउंट ले लिया, एंड देन यू परचेस समथिंग और यू डेबिटेड क्रेडिटेड अमाउंट है, then you need to do some calculation की plus minus का, that time value will be changed. So that time you will go to the use late keyword. Constant will always for the constant keywords कि आपका value पूरे project में कहीं change नहीं होने वाला है. And try to avoid the where keyword. Okay. So these are the difference between the variables की where, late, const क्या होता है. Then moving यहाँ पे कोई ये आपको questions, any question? Okay, so yeah, moving to the next slide की data types. Okay, so ये हो गए आपके keywords, वेरिएबल के कीवर्ड्स कौन से? where, let, const. इसके अंदर का टाइप आता है डेटा टाइप्स, जो वी हैव सीन इट हियर, लाइक कि जब मैंने एज दिया था तो यहाँ पे मैंने नंबर ये एज अ टाइप डिक्लेयर किया, सो इट्स ये नंबर एज अ डेटा टाइप हुआ. इसका वैल्यू का टाइप क्या है? नंबर. अगर मैं नेम देता हूँ तो उस वैल्यू का टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग.
अगर वैल्यू में ट्रू फॉल्स देता हो तो उसका टाइप क्या होता है, बुलियन. सो दीज आर द डेटा टाइप्स. बट बिफोर लर्निंग द डेटा टाइप्स, थ्री थिंग्स नीड टू बी रिमेम्बर इन डेटा टाइप्स. क्या होता है ये, ऑलवेज रिमेम्बर, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपका बेसिक नॉलेज है, आपको कितना पता है जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के बारे में. So three things what you need to remember about the data type. Data type syntax. The first one is the data type, second is the annotation, and third one is the type inference. So आपको क्वेश्चन से रहेगा कि what is the difference between annotation and type inference into the data type. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत बार हमने देखा है ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं लोग, और पता नहीं होता, इतना बेसिक लेवल पे नहीं पता होता है कि क्या है एक्चुअली. तो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. सपोज we will also use to try to let keyword avoid a where keyword. So इसमें data type क्या हुआ, data type is a number. Number is a data type. Okay. Then second thing is the annotation. So annotation क्या हुआ, ये जो वैल्यू आता है कोलन के साथ विथ डेटा टाइप, कोलन एंड डेटा टाइप, इसको एनोटेशन बोलते हैं इन टाइपस्क्रिप्ट. टाइप एनोटेशन क्या बोलते हैं इसको, कोलन फॉलोड बाय टाइप नेम फॉलोड बाय टाइप, इसको क्या बोलते हैं, एनोटेशन. अगर आपको कोई एक इंटरव्यू में पूछता है कि एनोटेशन क्या होता है, सिंपली यू कैन डायरेक्टली राइट वन डिक्लेयर वन वेरिएबल, सिंटैक्स वेरिएबल लिख के दिखाओ उनको, तो बताओ कि कोलन के बाद, और यू कैन ओरली आल्सो से कोलन फॉलोड बाय टाइप, इट्स अ एनोटेशन. एंड थर्ड थिंग आती है कि टाइप इन्फरेंस. तो टाइप इन्फरेंस क्या होता है, सीखेंगे. टाइप इन्फरेंस सपोज देखो, मैं सिखाते सिखाते मुझे ऑटोमेटिकली ये टाइपस्क्रिप्ट सजेशन दे रहा है कि टाइप इन्फरेंस क्या होता है. सपोज अभी मैंने दिया, उसने डिक्लेयर कर दिया कि लेट स्कोर इज इक्वल टू 90. मैंने जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में एक डिक्लेयर कर दिया कि आपके, मैंने कुछ डेटा टाइप ही नहीं दिया. विदाउट डेटा टाइप आई हैव रिटन एज अ लेट स्कोर इक्वल टू 90. तो इन्फरेंस क्या होता है, इन्फरेंस दैट स्कोर इज फॉर द टाइप नंबर, कि ये स्कोर का नंबर टाइप कभी भी चेंज हो सकता है. करेक्ट. सो ये इन्फरेंस हुआ कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि एट रन टाइम इट चेंज द वैल्यूज ऑफ एनी टाइप. तो इसको टाइप इन्फरेंस बोलते हैं कि एनी टाइम दैट कैन बी चेंज द वैल्यू. कि सपोज अभी मैंने आगे जाके स्कोर इक्वल टू 95, 95 नहीं सॉरी, यहाँ पे एज अ टाइप चेंज कर दिया, डायरेक्ट स्ट्रिंग ले लिया मैंने. तो सर ये फंक्शन के अंदर अलाउ नहीं करते हैं इसे, हम विल रिमूव इट्स एज अ फंक्शन. What is saying? Type. Oh, sorry. May you can see it's to the JS file. I'm tried it to the JS, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट है ना, इसके लिए इसको टाइप इन्फरेंस बोलते हैं. तो टाइप इन्फरेंस आता है जावास्क्रिप्ट में. So I was tried into the TypeScript. That's why it's given as the error. But always they will ask you the, जब आप TypeScript का इंटरव्यू देते हैं या प्लेराइट का इंटरव्यू देते हैं, तो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन आपको जावास्क्रिप्ट के भी आएंगे कि बिकॉज जावास्क्रिप्ट TypeScript इज अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट. सो आपको आएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एनोटेशन एंड टाइप इन्फरेंस इनटू द जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट. तो टाइपस्क्रिप्ट में एनोटेशंस क्या होता है, colon followed by the type, it's the annotation. and javascript में type inference क्या होता है कि at run time it decide the type, कि score का run time क्या decide करेगा, type क्या है, number. score का run time type decide होगा, it's a string, so it's a type interference. Okay, now we'll start with the variables. Data types. Okay, variable data types.
Okay, so there are two types of data types. One is the primitive data type, second one is the non-primitive data type. So we'll go with the primitive data type. So, mainly difference क्या होता है primitive data type and non-primitive data type में कि primitive data type can स्टोर अ सिंगल वैल्यू एट वन टाइम कि नंबर के अंदर आप एक सिंगल ही वैल्यू स्टोर कर पाओगे, स्ट्रिंग के अंदर वन सिंगल ही वैल्यू स्टोर कर पाओगे. सो डिफरेंस द डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज प्रिमिटिव डेटा टाइप मेंबर कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू एट वन टाइम एंड सेम फॉर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैन स्टोर अ मल्टीपल वैल्यूज. एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, क्लास के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो. सेम फॉर ऑल द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, but for the primitive data types we can store single value at one time. So we'll see the example of one by one uh, data types. One by one data types we can see primitive data types. So we'll start with the number. Okay. Just a minute. Okay. So we already know key. So now we'll see with the types. Let score number 90. So here you can see directly कि स्कोर का नंबर दे दिया है हम, स्कोर का डेटा टाइप क्या दिया है हमने, एज अ नंबर दिया है. सो इट्स अ डेटा टाइप. Just I can showcase you under the function, so it will be easy for you. If you see function test number type. Now I have created one function. ये function मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. So you just keep in mind कि हमें रन कर रहा हो तो function के अंदर लिख के कर रहा हूँ. So suppose now we'll go with the number data type as a number. So number data type कब use होता है? Any value you want to store into the any variable, that time we'll go with the data type as a number. So अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होगा थोड़ा बहुत रिगार्डिंग द जावा, C sharp, C++, that time we need to we have a different types of data types कि for only number के साथ आपके पास रहता है कि mostly for integer number they use as a integer int. Then for the pointers number they use as a float. अगर आपका बहुत बड़ा वैल्यू है then use as a double. सो इन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में इतने अलग अलग टाइप रखे नहीं टू रिड्यूस द कंफ्यूजन ऑफ देयर यूजर्स. सो दे एक ही डिक्लेयर करो नंबर, उसके अंदर यू कैन यूज एनी फ्लोट डबल. आप वी कैन डायरेक्टली लेट फ्लोट नंबर, वेरिएबल का नाम दिया मैंने फ्लोट नंबर, नंबर इक्वल टू पॉइंट में वैल्यू दिया, फ्लोटिंग वैल्यू दिया. सो इट कैन आल्सो बी स्टोर्ड इनटू द सेम नंबर डेटा टाइप. नाउ अभी मैं देता हूँ लेट बिग वैल्यू. जावा में क्या होता पता है क्या कि अगर आप ऐसे बिग वैल्यू देते हो तो आपको डबल करके यूज करना पड़ता था, नहीं तो लॉन्ग वैल्यू यूज करना पड़ता था. लॉन्ग भी एक कीवर्ड था to store the big values to store the into the value. That time we need to use as a this particular long keyword into the Java. But TypeScript ने ये सारे इस नंबर के अंदर ही दे दिए. Anything you want to stored as a number, use as a data type as a number. अभी मैंने यहाँ पे डबल कोट में as a string दे दिया तो इसने error दिया because we have declared it as a number, but while returning it use it under the string. So we need to remove it. So now if we float number, okay, so we can now terminal. So just let me clear it.
तो यहाँ से डिलीट भी हो सकता है. Now we'll just run this program again. Just let me save. Okay. So TypeScript executor command, date, file name, and dot ticker. I have entered it. It's not. Here semicolon should be can. No, show semicolon is not mandatory into the TypeScript. Just Okay. Java में होता है. Here, just let me debug. सर सेव कर लीजिए फिर आ जाएगा. सेव किया है. Oh sorry, यहाँ पे मैंने अभी फंक्शन लिखा था. टू कॉल एनी फंक्शन वी नीड टू गिव एज फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे ये छूट गया था अपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट. यू कैन सी ये बग वैल्यू आ गया. बिग वैल्यू, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक. समटाइम्स इट्स हैपन कि आप पूरा कंसोल के भरोसे चलते हो तो दैट टाइम इट कैन गिव द एरर कि अभी मैंने जस्ट टैप टैप कर दिया, इट्स ऑटो प्रोविजन कोडिंग दे रहा था. सो इट मिस्टेकली I just forgot to give this parenthesis. So now if I run the whole program again, like we can see integer value, floating value, big value, we can store inside the inside one only number data type कि हमें जावा जैसा अलग अलग देने की जरूरत नहीं है. One more thing कि अगर आपको लाइक यहाँ पे विथ स्ट्रिंग मुझे नंबर्स प्रिंट करने थे इन कंसोल लॉग, सो आई हैव एडेड द प्लस साइन सिंबल. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एडेड एज द कॉमा एज वेल. सो कॉमा इट्स अ syntax of our TypeScript. ये plus का plus they have provided the plus as well and comma as well, but we can go with the comma only because it's a official their syntax. They said कि plus भी use सब कर सकते हो, but for the as a programming standard as per the TypeScript we need to use as a comma only. कि आपको string के साथ जब आपकी value print करनी है, that you will use as a comma under that after the string value. Okay. So this is the type of the number, data type number. Then we'll go with the string data type. So string data type, we can declare the string with the 3 different types. We can declare string with 3 different ways. 3 ways. Okay. Now let name one string hello world. अभी ये मैंने क्या किया, डबल कोट के अंदर दिया, सो इट कंसीडर एज अ वन टाइप. ओके, डबल कोट के अंदर भी हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं. सेकेंड, लेट नेम टू स्ट्रिंग इक्वल टू, अभी सिंगल कोट के अंदर आल्सो वी कैन गिव द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट लर्न. ये सिंगल कोट के अंदर भी वी कैन declare a string. Third one is a backstep keyword. Backstep keyword पता है कि जो escape बटन के साथ होता है ना अपना ये वाला टिल्ड के नीचे ये नॉर्मल वाला, sorry. So this keyword is a backstep keyword जो escape बटन के पास होता है. Using this also we can declare a string, but to declare this we need to give it to the कंसोल लॉग ओनली कि आपको उसको यूज करना है तो कंसोल लॉग के अंदर भी यूज कर सकते हो. लाइक यहाँ पे भी यूज किया, पर उसका यूज क्या है कि टिल्ड में बैकस्टेप में क्यों दिया है, बिकॉज इजीली वी कैन गिव द सिंगल कोट, डबल कोट लाइक नॉर्मल लैंग्वेज. तो टाइप्स ये
बैक स्टेप का यूज क्या होता है, जस्ट आई कैन शोकेस यू कि बैक स्टेप का क्या होता है यूज। सपोज कंसोल डॉट लॉग, और मुझे कि ये दोनों स्ट्रिंग या सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग आपको एक कॉन्केट करना है, दोनों मिक्स करना है, दैट टाइम वी कैन यूज एज अ टिल्ड वन, बैक स्टेप वन। तो बैक स्टेप कैसे यूज होगा कि मैंने यहाँ पे दे दिया कि एक स्ट्रिंग दे दिया पहले हाय, उसके बाद मुझे यूज करना है कि कीवर्ड ये मिक्स करना है, कॉन्केट करना है सेकेंड स्ट्रिंग नेम टू, देन इट्स सिंबल लाइक डॉलर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने उसका वैल्यू दे दिया नेम टू, अगेन स्पेस डॉलर, उसके अंदर दे दिया मैंने नेम 3। ओके, जब आपको वैल्यूज कॉन्केट करने अंडर कंसोल डॉट लॉग, देन वी कैन यूज एज अ दिस बैकस्टेप सिंबल। लाइक अगर अब इसे आप देखोगे रन करके, सी इट्स अ कॉन्केट द स्ट्रिंग हाय माइक्रोसॉफ्ट लॉन्ग टाइपस्क्रिप्ट। अगर मैं ऐसे इसकी डायरेक्ट नॉर्मली ऐड करने चाहता है इसी वैल्यू के अंदर, सपोज वेयर कॉन्केट कीवर्ड अंदर नेम वन प्लस नेम टू प्लस नेम 3, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग जो हाई ऐड किया है वो ऐड कर नहीं पाता मैं यहाँ पे, करेक्ट, ये से एरर दे देता हमें। So that's why we can use as a third one की third type की backstep we can use. So in that case we can use a backstep. Now we can declare a string by 3 ways. First way is under the double quote, second way is into the single quote, third one is with the backstep. मोस्टली आपका अगर आप जब रियल प्रोग्रामिंग में या रियल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तब ये बैकस्टेप वाला बहुत बार यूज होता है आपका इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द बैकस्टेप वन। ओके, So for concatenate to string, no need to use any function. Concatenate directly we can. yes, to string directly we can concatenate, but if we want to with the to string, if we want to add one default one कि आपका रन टाइम आपको कुछ ऐड करना है और स्ट्रिंग, that time we need to backstep. Normally to also we can do directly. Suppose मैंने console.log लिया, सॉरी console.log लेके मैंने डायरेक्टली नेम वन प्लस नेम टू लिया, वी कैन यूज प्लस नेम 3 एज वेल इधर, बट उसके साथ जो मैंने एक एडिशनल दिया जो स्ट्रिंग में था ही नहीं मेरा, ये हाई वर्ड एडिशनल स्ट्रिंग हुआ है, करेक्ट, ये अगर मुझे देना है देन वी नीड टू गिव एज अ बैकस्टेप वन। अच्छा, कोई फंक्शन नहीं होता है क्या concatenate करने का? नहीं, कॉन्करेंट का फंक्शन नहीं इसमें, जावा यहाँ पे वी नीड टू डू एज अ प्लस प्लस वन की, जैसे दो स्ट्रिंग करना है तो दोनों का प्लस, तीन करना है तो तीनों का प्लस, दैट वे वी कैन डू। ओके, so this way we can use as a string keyword, string data type. Then third one is a boolean. So boolean means true false value only. So whenever we need to declare as a true false value, then we'll go with the boolean value. So suppose boolean type, so is done is always remember कि वेरिएबल्स के अंदर इन वेरिएबल वी कैन गिव द स्पेस इन बिटवीन वेरिएबल नेम, तो it will give the error. Now I have removed that space. So boolean टाइप का यूज होता है, सपोज आपको कुछ भी ट्रू फॉल्स वैल्यू का कंडीशनल स्टेटमेंट देना होता है, दैट टाइम वी डिक्लेयर इट एज अ boolean value. Like sometimes अगर हम बैंकिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, if you have any idea about banking projects, multiple times it come as a one boolean type variable into the our application, like is existing customer, that time we set as a true value or false value,
Also we can see like it's saving account. That time also we can give either true false value. That time we use a boolean value. So this way we can declare as a boolean value if you want to print that normally. Console.log boolean value comma done. So जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में अगर मैंने सेमीकोलन नहीं भी दिया फिर भी यूज होता है. इट्स नॉट मैंडेटरी टू आपको सेमीकोलन देना ही है. You can see it's printed the boolean value as well. Now next keyword is a null. So null, sometimes it's very rarely we use a null keyword, but TypeScript has provided it as additional features. Now they have just newly launched this language, so they need to give some new features. So they have given the new features like null, undefined, any. These new features they have, these new data types they have provided to their language. So null, if you want to just declare any variable, but don't want to give any value, don't want to give any value in the programming, that time we use as a null. कि suppose मैंने let number और उसकी वैल्यू दे दी मैंने null. null का डेटा टाइप नहीं होता है, so directly we can give it as a so directly we can provide as a null value. Okay. Apart from that, if we see as a undefined one, so what is undefined? We already seen in our project कि like suppose मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसका वैल्यू भी नहीं प्रिंट डिफाइन किया, एंड अगेन आई वांट टू प्रिंट इट एज console.log. These are the very rare uses कि कोई यूज नहीं करता है इसको. अगर आप पूरे रियल लिस्ट में जाओगे तो ओनली दिस विल बी यूज एज नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, and most of the people use any as well, but it's not a standard practice to use any. I will let you know later कि कैसे any use होता है. Like here you can see, if we haven't declared anything with the variable, then it will automatically give the undefined one. Okay. Now after that we have any value. तो any का क्या होता है कि it's a flexible type that allows any value, means we can add any value with the any type key. We can directly declare as a string variable or number variable. Suppose I have declared it as a variable name and using this any. तो any के साथ क्या होता है कि I can use as a string also. any का मीनिंग ये वही है कि आप we can declare any value for that particular data type. कि data type में any value we can store, like we can use as a string, then directly we can use as a number भी यूज होता है, no error. We can use as a boolean value. Okay, so any type of value we can assign it to the any data type. तो ये कब यूज होता था कि जब आपको पता नहीं आपकी आउटपुट वैल्यू क्या आने वाली, when you work on real time project, that time you have no idea about कि कौन सा यूज होने वाला है, कौन सी वैल्यू आने वाली है आपके एज आउटपुट. That time we use as a any. So multiple time people are used as a any keyword as well, any data type as well, while working on the live project. कि जब उनको पता नहीं होता कि उसका आउट क्या होगा, क्या वैल्यू आ सकती है, that time they use the any value. So it is one of the usable data type. After that we see the union type. So union type क्या होता है? That allows multiple types of variable. कि suppose we can give the additional multiple type as well. Suppose if I set as a variable, suppose I have given as ID, तो ID के साथ I can give as a string plus additional pipe मैंने दे दिया number.
इक्वल टू 1 2 3। ये कौन सा कीवर्ड हुआ अपना? यूनियन टाइप। यूनियन टाइप मीन्स we can add an additional condition, either string or either number we can provide. So if I run it here, see it's printed. अगर मुझे string देना है तो I can give as a string 1 2 3. Okay. So this is one of the type as a union type of a data type. So this is there is one of the data type. So for void use for a function that don't return anything. कि अभी जब आप फंक्शन सीखेंगे ना डिटेल्स में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में, दैट टाइम वी कैन मोस्टली यूज इट एज अ void की void केस यूज है। void रिटर्न्स नथिंग। जब अगर सपोज मैंने समटाइम्स वी रिटर्न सम फंक्शन, लाइक अभी ये फंक्शन यूज हुआ है, सो ये void का हम मोर इन डिटेल सीखेंगे जब फंक्शन का पार्ट सीखेंगे। जस्ट मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि कैसे होता है। लाइक मैंने यहाँ पे अभी फंक्शन यूज किया, फंक्शन में void तो ये void का यूज जब होगा कि ये फंक्शन रिटर्न में कुछ नहीं कर रहा है, कि सिर्फ ये कंसोल लॉग प्रिंट कर रहा है, that time we use the void key, void data type. But sometimes we return it as a calculation like age, let age equal to 25 plus 5, and if I want to return something, return age value, तो देखो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने void यूज किया है, बिकॉज इट्स रिटर्न अ नंबर वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे उस टाइम पे नंबर देना होगा। ठीक। So void का मीनिंग होता है if any function is not returning anything, that time we use as a void keyword. But if we are not returning anything, that time we use a void. But if we returning any value, कि अगर मैं string return कर रहा हूँ तो that time for the with function we use the data type as a string. If we return the any integer value or number value, then we use the number one, कि उसका data type देते जो भी value return हो रही है उसका value return करेंगे। So I think today we have covered most of the things कि variables में क्या actual variables क्या होते हैं, how we can use as a variable कि where कब use करना है, let कब use करना है, constant कब use करना है, const कब use करना है, their differences, what are the best practices to use it. Then apart from that, we seen the main things that we need to remember about the JavaScript and TypeScript. One is the annotation, second is the type inference. So annotations क्या होता है? Annotations is nothing but as a कोलन फॉलो बाय द डेटा टाइप, की जो भी डेटा टाइप दिया है आपने उसके पहले कोलन से जो वैल्यू चालू होता है उसको नंबर बोलते हैं। देन टाइप इन्फेरेंस क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में एनीथिंग कैन बी मींस ऑटोमेटिकली इट कंसीडर द टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, की इसका अभी वैल्यू अगर मैंने एज इक्वल टू 30 दिया है तो 30 इसका डेटा टाइप क्या हो गया कि नंबर हो गया। अगर इफ आई डायरेक्टली गिव एज अ स्ट्रिंग वैल्यू देन इट ऑटोमेटिकली टेक इट एज अ string data type. So इसको बोलते हैं कि inference type as a inference. Apart from that, we see in the primitive and non-primitive data types. So in primitive data types, what is the difference between primitive and non-primitive data types? So primitive means primitive data types are those data types which can store only one value, single value at one time. And non-primitive data types क्या होते हैं कि that can be store multiple values at वन टाइम, कि एरे में आप मल्टीपल वैल्यूज बट 10 15 जो भी आप एरे डिक्लेयर करते हो, सेम इन द क्लास वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वैल्यूज। जब आपको मल्टीपल वैल्यू डिक्लेयर करने होते हैं देन विल गोज विद द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड जब सिंगल वैल्यू यूज करना होता है देन विल गोज विद द प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव में वी गोन विद द नंबर में मल्टीपल नंबर्स वी कैन सेट, कि जावा में जैसे होता था वैसे नहीं, यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली store the integer value, floating value, double value, long value, big value, all the values we can store into the single number data type.
Then string we can declare with the 3 different types like single quote, double quote, and backstep. Then we'll see we have seen the Boolean data type. In Boolean data type, we store the true and false value, conditional values, true, either true or false. Then we see the null. Null is nothing. Directly we can set a null value. Then we use the null null data type. For undefined one, null and undefined, both the values are not mostly used, or just data type. Undefined also, if you don't want to define any, declare any value, or not define, don't want to define any value, that time it gives the undefined one. And then we see the any. This is one of the usable, very usable कि आप जब live project में काम करते हो तो most of the times these keywords is used कि it can be in the any key any data type we can store any value, anything, either number, either string or boolean value, null, anything we can store. Then we see the union type. Union type means the multiple type data type we can store, either string or number or boolean, anything we can use the this type of condition we can use addition or condition, either string or either number, or either string or boolean also we can say. So anything we can be any two values we can give to the union type. Then we see the void value. Void means it's return nothing. Whenever the any function not returning anything, that time we use as a void value. एंड एनी अभी फंक्शन हम डिटेल में सीखेंगे तब आपको और पता चलेगा कि फंक्शंस कैसे रिटर्न करते हैं वैल्यू. यहाँ पे जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि जस्ट आई डिड वन एडिशन and then return the age one coefficient. That time it's returning number value. That's why I have set as a number return type for that particular function data type. अगर मुझे कुछ नहीं होता, अगर यहाँ पे कुछ देना ही नहीं मुझे रिटर्न, अगर मैंने रिटर्न कर दिया तो देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा. That time it's returning or not anything, then I need to use as a void one. So yeah, so today we'll go with the data type. We learn about the variable different types, and then data type, primitive data types. So tomorrow we'll go with the non-primitive data types and remaining parts. Okay. So any question on today's session? No. अब तीनों का ये सेटअप आर यू हैव यू डन कि कुछ इशू आया सेटअप के टाइम पे? सेटअप तो हो गया. ओके, देन लेट्स स्टार्ट टू द प्रैक्टिस ऑफ द स्मॉल प्रोग्राम्स की डेटा टाइप्स कैसे यूज होते हैं, बूलियन वैल्यूज कैसे यूज होते हैं एंड स्मॉल प्रोग्राम्स. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ मींस अभी आपका मेन बेसिक तो हो गया, वेरिएबल्स सेटअप हो गए, वेरिएबल्स हो गए. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल टेक complex types. Yes, Barka. Sir, you are talking about the type interference. Type interference, when we explain in the interview, though, we will say it is in the JavaScript, not Yes. in the T. Types, which JavaScript is a superset of a TypeScript, correct? Right. तो JavaScript में जो भी हो TypeScript में by default आ जाता है. Okay. Yes. So एनीथिंग, अगर आपका जावास्क्रिप्ट का कुछ भी क्वेश्चन आया तो टाइपस्क्रिप्ट में वो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा. तो ओके, आई थिंक अगर कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एंड ऑलवेज वी आर गुड इन क्वेश्चन. ओके, थैंक यू. thank you, sir. Thank you. Thank you.